Good morning. Yogi Adityanath's Operation Duracharya. Now, it is the operation which the UP government has already partially it has announced. The operation is named Operation Duracharya. So, what is this Duracharya? भाई अब हिंदी में अगर मैं बोलूं दूराचार्य तो सबको पता है पीपल हुज चरित्र इज नॉट गुड they are called duscharitra. So the operation is called duracharya. So what is this in this operation? In the people who are accused of sexual harassment or other crimes against women, or you can say जो मतलब जो सेक्सुअल हैरेसमेंट किए होंगे जो लोग और जो क्राइम किए हैं अगेंस्ट वुमन, देन द ईव टीजर्स जो मंचले है जो रास्ते में लड़कियों को छेड़ते हैं, फेमस ईव टीजर्स. और इट कैन हैपन और जो कुछ क्राइम किए हैं अगेंस्ट वुमन और ऐसे लोग एंड दोज पीपल हु हैज द हैबिट of it's a habitual offender of in case of sexual related crimes, तो इन सब का पोस्टर लग जाएगा. These people will have photos of this photos will be in billboards. Big poster will be shown on famous road. So this is ऑपरेशन दूराचार्य. मतलब उन लोगों को बोला जाएगा कि दे आर दुष्चरित्र जो सेक्सुअल जो हरेसमेंट में क्राइम करते हैं, ऑफेंडर है, हैबिट ही है कि भाई क्राइम करो इन सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज जिसका नाम हर वक्त आता है. और समझो कि जो ये मन चले ईव टीजर्स रास्ते में लड़कियों को छेड़ते हैं, दोज पीपल हु हैव दिस क्रिमिनल मेंटालिटी or those people who always wants to do some sexual indulge in sexual related crimes, those people's picture will be clicked, name will be there, and posters will be seen in various parts of Uttar Pradesh. बड़े बड़े जगह बड़े बड़े रास्ते में वो लोग फेमस हो जाएंगे. So this is the step Yogi Adityanath ji has taken, and this step Yogi ji has taken just he is trying to reduce the crime against women in Uttar Pradesh. We already know that Yogi Adityanath ji has launched this anti-Romeo squad. एक एंटी रोमियो स्क्वाड योगी आदित्यनाथ जी का सरकार ने लॉन्च किया था, अभी भी है वो जो स्क्वाड, दोज एंटी रोमियो स्क्वाड मूव्स अराउंड एंड वो जो रोमियोज है ना रास्ते में जो छेड़छाड़ी करते हैं लड़कियों को, उनको पकड़ के क्या डंडा मारते हैं वो तो आपने देखा ही है. सो आफ्टर दिस एंटी रोमियो स्क्वाड योगी आदित्यनाथ जी केम विद दिस दूराचार्य, Operation Duracharya. Now the anti-Romeo squad has got some there was some issues के उन लोगों को हरास किया जाता था. जो रोमियोस को पकड़ते थे तो उनको मुर्गा बनाया जाता था, हरासमेंट किया जाता. तो ये एक एक्यूज लगा था एंटी रोमियो स्क्वाड पे. बट नाउ Yogi Adityanath ji has come up with some kind of he is trying something. He's not stopping. So Operation Duracharya ने ये कॉन्सेप्ट से योगी आदित्यनाथ सरकार लाए. Now you should understand Uttar Pradesh is a very big state. It's a very big state. करीब if I'm not wrong there are 80 member of parliament from Uttar Pradesh itself. And there is a concept of caste. There are different caste religion stays in Uttar Pradesh. और ये ऊंची कास्ट, नीची कास्ट, upper caste, lower caste, these concepts are there. And the rape the rape which is happening which we see ये कोई नया नहीं है. ये नहीं कि 2017 में योगी आदित्यनाथ जी का सरकार आया और रेप बढ़ गया. इट्स नॉट लाइक दैट. देयर वाज गवर्नमेंट ऑफ समाजवादी पार्टी, मायावती एक्सेट्रा, इन लोगों का गवर्नमेंट था. बीजेपी तो काफी साल के बाद उत्तर प्रदेश में आया. बीजेपी केम टू पावर आफ्टर सो मेनी इयर्स.
So there was crime and there was rape in Uttar Pradesh, but after Yogi Adityanath ji really he took lots of steps, bold step लिया, फिर भी ये रेप क्राइम का जो इंसिडेंट है ना, ये सब चीज में उत्तर प्रदेश का नाम बार बार आ रहा है. So to reduce or try to reduce the crime against women, Yogi Adityanath ji Sarkar came with a operation Duracharya. तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसा रंग लाती है, बिकॉज कोई भी ऑपरेशन, whatever project or whatever operation take launch, we will know the effect of the operation after few months. कुछ month बाद इसका effect हमें पता चलेगा. At the same time, I feel this kind of operation Duracharya, not only in Uttar Pradesh, the number of states, be it a BJP ruled state or a non-BJP ruled state, they should also follow and they should also do something on this, because ये नहीं कि भाई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यही सब स्टेट को देखेंगे और पंजाब और राजस्थान को हम नहीं देखेंगे, ये तो होने नहीं चाहिए ना. So I feel this type of concept should be there in various part of India, so that the rapist will think twice, thrice before conducting or doing this activity, dirty activity of rape. At the same time, I feel that government should educate, or this sexual education, sex education should be there, काफी rigorously होना चाहिए in villages and various parts of the country. Sex education should be more active, and the woman should be, government should make women more strong with they should be trained with martial art and all the things, so that if a person try to do something with a woman or a lady or a girl, child, or whoever it is, or a boy, don't forget rape happened to boys also. So they can do something, they can teach that person immediately on the spot. So I feel Operation Duracharya is a very good such kind of operation. Such kind of things should happen in various parts of India. At the same time, sexual education we should start, and this make woman very strong, so that, again I am saying, कोई भी रेप करने आए, कोई भी छेड़ने आए, कोई भी ईव टीज करे, if somebody is teasing somebody on road, make sure the woman give that person, give it back, उसी समय पे उसको दो. The woman should be more powerful, and the family of children, जो बच्चे है ना, बच्चे लड़के के माँ बाप को भी सिखाना चाहिए कि बच्चे, आप लड़के हो, you are a boy, doesn't mean that you have got 4 hands, you cannot do all these things. So the parents of a boy should also teach their boy कि please don't do such activities, otherwise you will have a bad time. तो वो डर होना चाहिए, that fear should be there. Once the fear comes in the mind, this rape and all this criminal activities will stop. So we need to see what happened, what is the result of this Operation Duracharya in coming months. Thank you very much.